Audible? Respected Dr. Karan Singh ji, Mr. Muzaffar Ali, Mr. J. Srivastav, my colleague, and all guests who have come here to listen to this wonderful poetry reading by Dr. Karan Singh ji. In fact, welcome to all of you for what I think is going to be a very unique event, because it is a poetry reading, but not just any poetry reading. This is a poetry reading, as what Dr. Karan Singh ji told me, is from memory. He has such a vast repertoire of poetry within him. And when I said that, shouldn't you be, when I met him at that time, and when I asked him, shouldn't you be taking some of the books, he said, books are not for me. I am going to read, I am going to recite from my memory, and that's how poetry should be known. Poetry, it comes from a vast wealth of oral tradition, and the practice of memorizing poetry, imbibing poetry through the sound is not prevalent anymore. So I think what I will do is not read but recite poetry from my memory. The second thing, I had gone with a limited agenda of wanting to hear him recite Sanskrit poetry, but I came back with such a wonderful gift that he offered to to recite from 5 languages, including Hindi, Urdu, Dogri, Sanskrit, and English. And it was, came back with a full mind and a full imagination, and that is exactly what Dr. Karan Singh ji is going to do. And I am not going to introduce him to this audience. He belongs to all of us. He belongs to the India International Center. He's a poet. He's a public servant. He's a thinker. Everything. So I don't think he needs a special introduction. So a very warm welcome to you, sir. And we look forward to your poetry. I also welcome Mr. Muzaffar Ali, who doesn't need no introduction to this audience again. He's a filmmaker, he's an art critic, he's a social activist, and above all, he has worked very closely associated, in fact, himself with Dr. Karan Singh ji's work, and I think he's a personal friend. Also, they have worked together in setting up the Rumi Foundation. So he will be steering today's poetry reading. So over to you. Well, it's such an honor and a privilege to sit next to Dr. Karan Singh, and we're all waiting with bated breath to listen to him, to listen to his to the poetry that drives him. Actually, we are all somehow, somewhere driven by poetry. And if we are not driven by poetry, there's something missing in us. And it's not necessary that you have to be a poet. I think if you are you have a tender heart, you have a sensitive kind of an approach to life, there's something that makes you a poet. तो मेरे एक दोस्त ने कहा था, अगर अच्छी शायरी सुनने को मिल जाए तो शायरी मत करना. तो वो मैंने गिरा में बांध के बात रखी, और मैं शायरी करने की हिम्मत नहीं करता हूँ. But all my films have been driven by poetry, and there's a lot that I've learned from poetry, and it's been a great privilege to be associated with Dr. Karan Singh. And the Rumi Foundation essentially celebrates poetry. It celebrates poetry in every form. We have a festival called Jahan-e-Khusro, in which we choose poetry of the mystics. Because poetry की भी मंजिलें होती हैं. एक तो इब्तिदाई मंजिल होती है जो मतलब बाबा ब्लैक शिप किस्म की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो इश्क के अलग अलग दर्जे होते हैं, और फाइनली एक समर्पण की होती है, जो मैंने कश्मीर में पाई. आपका कश्मीर जो है उसमें इतना सूफियाना कलाम अभी तक महफूज है लोगों के दिलों में, उनकी खानकाहों में, उनके मकामात में, उनके संतूर में, उनके रबाब में, कि वो एक पूरा एक नक्शा खींच देती है. जब मैं वहाँ से मैं फिल्म बना रहा था जूनी, वो भी एक शायरा पे थी,
उसको उससे जब मैं हार के दिल्ली आया तो मुझे जहान खुसरो समझ में आया कि एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग इस तरह की पोइट्री को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो दुनिया जो है वो बहुत ही कठोर हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कह के, दुनिया सुने तो किस्सा गम है बहुत तवील, हाँ तुम सुनो तो किस्सा गम मुख्तसर भी है। लेकिन इस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर करण सिंह का जो एक शायराना मिजाज है उससे महजूज होने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर सर। Thank you, Muzaffar bhai. He cut short his stay in Bangkok for a couple of days to be able to accept our invitation to preside over this function. I've really been tricked into this function by Sudha. She had come to ask me to recite in Sanskrit. तो मैंने कहा संस्कृत में I can recite in other languages also. वो क्या कहा मैंने पकड़ ही लिया उन्होंने मुझे. Or they actually came out with a program before I knew what was happening. So I've now found myself इम्तिहान हो रहा है आज मेरा. कौन सी Let me say one thing. I think people forget a basic fact. There's a difference between poetry and prose. Prose is written to be read. Poetry is written to be heard. There are different organs involved. If you hear prose, it doesn't make any sense. And if you read poetry, it doesn't. When I read The Wasteland, it didn't make any sense. Just nonsense. When I heard Spade's magnificent rendering of it, it came alive. So poetry has to be heard. ये एक बड़ा फर्क है इसमें. ये तो एक पढ़ने वाली चीज़ है और सुनने वाली चीज़. There are different organs involved. Now people have forgotten that. As a result of which, people are forgetting poetry also, which I think is a great pity. As Muzaffar said, unless we have some rhythm in our lives, unless we have some music in our lives, the life becomes very, very dull and very boring. So I wonder, you see, I've been learning poetry for 80 years. I'm now 92. So I was 12 years old, I remember doing school. We had a very good English teacher, Mr. Siddharthachari, and he used to make us recite poetry. Only not listen to his recitations, he made the boys recite poetry. So उस वक्त से I've been interested. So I don't know where I should start now. Perhaps I should start with some of the poems I learned when I was very young. There's Wordsworth's famous poem, The Daffodils. All of you must have heard that. I wandered lonely as a cloud that floats over high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the dancing waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth of joy this joy had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inner eye, that is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Lovely poem. And Wordsworth was great, as you know. He always seemed to feel that, what did he say? Intimations of immortality. Yes, that's a famous poem. And I used to remember the beginning of that. Now, poems by Yeats is one of my favorite poets. William Butler Yeats, as you know, was an Irish poet, a mystical poet. There's a poem called The Song of Wandering Angus, A-N-G-U-S, is some kind of, जैसे हमारे वो
वो होते थे ना, those beings that lived in the air, not human beings, but they were sort of spirits. I went into the hazel wood because a fire was in my head, and cut and peeled the hazel wand, and hooked a berry to a thread. And when moss-likes were on the wing, and moss-like stars were flickering out, I threw the berry in the stream, and caught a little silver trout. When I had laid it on the floor, I went to blow the fire aflame. But something rustled on the floor, and someone called me by my name. It had become a glimmering girl with apple blossom in her hair, who called me by my name and ran and faded through the brightening air. Though I am old with wandering through hollow lands and hilly lands, I will find out where she has gone, and kiss her lips and take her hands, and walk amid long dappled grass, and pick till time and times are done the silver apples of the moon, the golden apples of the sun. What a beautiful poem. You see, Ye's poems always end with a little upturn. Another beautiful poem by मेरा नहीं है, उसको एड्रेस करता हूँ. इसको शूट करके When you are old and grey, please listen, it's a beautiful poem. When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true? But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. Isn't that a lovely poem? The second stanza, how many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. What a beautiful, one of those beautiful stanzas, I think, in poetry. I'll send this to Meera. Okay. Now, where should we go from here? Again, Wordsworth. There was a time when meadow, grove, and stream, the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light, the glory and the freshness of the dream. It is not now as it has been of yore. Turn wheresoe'er I may, by night or day, the glory I have seen, I now can see no more. The rainbow comes and goes, and lovely is the rose. The moon does with delight look round her when the heavens are bare. Waters on a starry night are beautiful and clear. And yet I know where'er I go that there has passed away glory from this earth. वर्dsworth को यही दुख है कि उसकी उम्र बढ़ रही है और बचपन में जो उसको दिखाई देता था वो अभी दिखाई नहीं देता. मेरे से तो रिवर्स हो रहा है. जो खुदा के फजल से जितना हो रहा उतनी मैं ज़्यादा देख रहा हूँ. यानी it's also a blessing. I have no particular thing for my childhood. I mean, I've had you must read my autobiography to find out about that. Anyhow, all right, now let's see. No, I can't, I don't remember the Charge of the Light Brigade. अच्छा, Shri Aurobindo की एक poem सुनाता हूँ. Shri Aurobindo, as you know, was not only a philosopher and a freedom fighter, he was a poet. And his long poems he's written as Savitri, I can't read, but the shorter poems are quite good. One of them is called Who. Who? In the blue of the sky and the green of the forests, whose is the hand that has painted the glow? When the winds were asleep in the womb of the ether, who was it roused them and bade them to blow? He is lost in the heart in the cavern of nature. He is found in the brain where he builds up the thought. In the pattern and bloom of the flowers he is woven. In the luminous net of the stars he is caught. In the strength of a man, in the beauty of woman, in the laugh of a boy, in the blush of a girl. The hand that's in Jupiter spinning through heaven spends all his cunning to fashion a curl. These are his works and his ways and his shadows. But where is he then? By what name is he known? Is he Brahma or Vishnu, a man or a woman? Bodied or bodiless?
twin or alone. We have love for a boy who is dark and resplendent. A woman is lord of us, naked and fierce. We've seen him amuse on the snows of the mountain. We've watched him at work in the heart of the spheres. We will tell the whole world of his way and his cunning. He is passion and pain. He drives us to sorrow and drives us to weeping, then lures with his joy and his beauty again. All music is only the sound of his laughter. All music is only the sound, divine laughter. The music. All music is only the sound of his laughter. All beauty is the smile of his passionate bliss. Our lives are his heartbeats. Our rapture of bridal of Radha and Krishna. Our love is their kiss. He strength that is loud in the blares of trumpets. And he rides in the car and he strikes in the spears. He slays without stint and is full of compassion. He wars for the world in his ultimate years. In the sweep of the worlds, in the surge of the ages, ineffable, mighty, majestic and pure. Beyond the last pinnacle seized by the thinker, he is thrown in his seats that forever endure. The master of man and his infinite lover is close to our hearts and we vision to see. We are blind with our pride in the pomp of our passions. We are bound in our thoughts where we hold ourselves free. It is he in the sun who is ageless and deathless, and into the midnight his shadow is thrown. When darkness was blind and engulfed within darkness, he was seated within it, immense and alone. It's a powerful poem. Some lovely lines in it. छापी है हूँ में किसी चीज में छापी आपकी जर्नल में छापी हूँ HU जो हूँ उसमें छापी The moving finger Fitzgerald उमर खयाम का जो उन्होंने तर्जुमा किया है तर्जुमा ने अंग्रेजी में जो उसको पेश किया है उमर खयाम The moving finger writes and having writ moves on, nor all thy piety nor wit shall lure it back to cancel half a line, nor all thy tears wash out a word of it. Think in this battered caravanserai, whose portals are alternate night and day, how Sultan after Sultan with his pomp abode his hour or two and went his way. They say the lion and the lizard keep the halls where Jamshed gloried and drank deep. And Rustam, the great hunter, the ass stands for his head but cannot break his sleep. Our love couldst thou and I with fate conspire to grasp this sorry scheme of things entire. Would we not shatter it to bits and then remold it nearer to the heart's desire? What a beautiful this is. Our love could thou and I with fate conspire to grasp this sorry scheme of things entire. Would we not shatter it to bits and then remold it nearer to the heart's desire? जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं चलती. So these are उसमें बहुत सारे हैं. There are some very good things in this. Myself when young did eagerly frequent Seeker and Saint and heard great argument about it and about, but nevermore came out by the door in by which I went. ये सुना बहुत हमने लेकिन सीखा कुछ नहीं. वही बात होती. And what else does he say? I love this Umar Khayyam's translation. They're very pithy, the quadrants. I've got it. Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveller. Long I stood and looked down as far as I could to went it bare in the undergrowth, then took the other, as just as fair as having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had really warned them about the same. And both that morning equally lay in step, with leaves no step had trodden black, or I kept the one for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I also took the road less travelled by.
हमारे यहाँ तो That's why आपके पीछे yes. Whose woods these are, I think I know. His home is in the village, though. He cannot see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the hill and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his bridle bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound of downy wind and easy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. जवाहरलाल जी के पलंग के ऊपर ये lines लिखे हुए थे. And woods are lovely. Maybe that's the way, death. That's the way you could escape. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. अभी बहुत काम करने हैं उनमें. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Another very short but very powerful poem by Frost. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Though if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. देखिए, I desire fire and hate ice. दोनों चीजें काफी है दुनिया को तबाह करने के लिए. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. I think it's a very beautiful poem. Have I taken up all my time? No, sir. कुछ और भी जुबानें करनी थी, भूल गया था क्या? सारी शाम आ गई बहुत टाइम है सर. नहीं बहुत सारी poetry, बहुत सी poetry. So many poems that are in English language. Ozymandias, इस स्कूल में पढ़ी थी. By Shelley. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, half sunken in the sand, a shattered visage lies, whose wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read that yet survive upon these lifeless things, the heart that mocked them and the hand that fed. And on the pedestal these words appear, look on my works, ye mighty, and despair. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Around the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away." उसने समझा होगा कि मैं खुदा को उसने कहा कि देखिए मैंने क्या किया, शर्मिंदा हो जाओ. अब वो गायब, उसको नामो निशान, चारों बैरान. These are sort of didactic poems that they also carry a message. Let me see. Your favorite poem, sir. Which one? Your favorite poem. These are my favorite poems. These are my favorite poems, more or less. संस्कृत सर. नहीं, अब उर्दू आएगी. उर्दू आएगी. हाँ, Blake. No, Blake, I know something from Blake. I can't remember exactly which is the poem that I know of Blake. Blake is a great mystic poet also. Sorry? Shelley's West, Ode to West is too long. It's a very difficult poem to remember. Tiger was my pet name was Tiger. So वो तो मैंने बचपन से Tiger burning bright in the forest of the night. Okay, अब उर्दू में क्या बोलूँ? ये बैठे हुए यहाँ मुझे शर्म आ रही है. उर्दू में कैसे बोल सकता हूँ? ये उर्दू के इतने माहिर हैं. कुछ गाना, हाँ. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले.
निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और खुदा के वास्ते काबे से पर्दा ना हटा जालिम, कि ऐसा ना हो वहाँ भी वही काफिर सनम निकले। और कहाँ वैखाने का दरवाज़ा और कहाँ गालिब, तो इतना जानते ना कहाँ, तो इतना जानते कहाँ, कहाँ मैखाने का दरवाज़ा और कहाँ वाइज, तो इतना जानते हैं कि कल वो आता था कि हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान फिर हम निकले, निकलना खुल्द से आदम तो सुनते। बड़ी अच्छी गज़ल है ये है। आप तो गाते भी हैं। ख्वाहिश, ख्वाहिश बड़ी अच्छी है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बताइए, नहीं बात तो वो किसी और दिन करना पड़ेगा। ये शाम अच्छी है। और फैज़ साहब हमारे घर तशरीफ़ भी लाए थे व्हेन ही केम टू इंडिया 50s 60s में, शायद 70s में। तो मेरे घर तशरीफ़ लाए थे। उनकी जो स्पेशल गज़लें मुझे पसंद हैं उन्होंने मुझे बड़ी मेहरबानी करके सुनाई भी। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। तुम आए हो तलाश में है सहर बार बार गुज़री है, जुनून में जितनी भी गुज़री बकार गुज़री है, अगरचे दिल पे ख़राबी हज़ार गुज़री है। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, इसलिए बैकग्राउंड ये है कि वो जेल में थे, वो सज़ाए मौत देना चाहते थे अंग्रेज़। वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा नुक्ता इन द फाइल्स जो जिससे वो सज़ा दे सके, वो उनको मिल नहीं रही थी। उसका इन्होंने लिखा था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। और फ़िज़ा के हाथों गुलों पर न जाने क्या गुज़री, कश्मीर की मुझे याद आती, फ़िज़ा के हाथों गुलों पर न जाने क्या गुज़री, चमन से आज सबा बेकरार गुज़री है। आखिरी है इसमें, न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है, न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुज़री है। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। बहुत अच्छी गज़ल, कितनी बढ़िया गज़ल है? जगह भरती जा रही है, 1-2 सीटें हैं यहाँ। अब मैं बोल ही चुका हूँ तो आप बात बड़ी लेट आ रहे हैं आप लोग। हाँ, दिस ऑलवेज। और उर्दू की क्या है, कौन सी गज़लें आती हैं मुझे? बहुत सारी याद है। हंगामे गम से तंग आकर इजहार मुसर्रत कर बैठे, मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिस्ता शरारत कर बैठे। शकील बदायूं ने कहे, हंगामे गम से तंग आकर इजहार मोहब्बत कर बैठे, मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिस्ता शरारत कर बैठे। ढूंढा तो बहुत हमने भी मगर पाया ना गमे हस्ती का मफर, वीरानी दिल जब हद से बढ़ी घबरा के मोहब्बत कर बैठे। और ये मैंने राज्यसभा में भी बोला था अपने स्पीच एंड में, हर चीज़ नहीं है मरकज़ पर, एक ज़र्रा इधर एक ज़र्रा उधर। हर चीज़ नहीं है मरकज़ पर, एक ज़र्रा इधर एक ज़र्रा उधर। नफ़रत से ना देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। ये बहुत लोगों ने पसंद किया, राज्यसभा ने बहुत तालियां बजी। हर चीज़ नहीं है मरकज़ पर, एक ज़र्रा इधर एक ज़र्रा उधर। नफ़रत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। और अल्लाह तो सबकी सुनता है, जुर्रत है शकील अपनी अपनी। अल्लाह तो सबकी सुनता है,
जरूरत है शकील अपनी अपनी, हाली ने जुबान से उफ भी ना की, इकबाल शिकायत कर बैठे। हंगामे गम से तंग आकर इजहार मुसरत कर बैठे, मशहूर सी अपनी जिंदा दिली, दानिस्ता शरारत कर बैठे। बहुत अच्छी गज़ल है, ये भी है शकील बदायूनी की। बाकी तो बहुत सारी रफ़ी साहब ने गाई हुई हैं उनकी गज़लें, लेकिन वो तो एक तरन्नुम से सुना नहीं, वो तरन्नुम वाला वो दूसरा दिन होगा। दूसरा दिन। हाँ ठहरिए, कौन सा, हाँ बड़ा अच्छा गाना था उनका, कौन सा, दिल की तमन्ना थी, क्या थी, मंजिल से भी दूर निकलते, दिल की तमन्ना थी मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। साथी मिला यूं तो मगर, रास्ते में था चांदी का नगर, चांदी की नगरी भाई उसे, हम रह गए आंखें मलते मलते। दामन की हसरत हाथों में है, यहाँ है जगह, वीराने में मुझे पूरी याद नहीं आई। आपको माशाल्लाह याद। कौन सी? You remember so much, माशाल्लाह। I remember quite a lot, but you know, don't remember as much in other languages as I do in English. That was really the language I grew up in. So, अब हिंदी में चलें। हिंदी में मुझे बहुत कम आती हैं कविताएं, लेकिन संस्कृत एक उन्हें बताता हूँ पहले हिंदी का। एक हिंदी जो खड़ी बोली है ना, उसमें रस नहीं है। रस है या अवधि में और या ब्रज भाषा में। भोजपुरी बोल रहे हैं सर। भोजपुरी भोजपुरी हमारी भाषा है। इन्होंने क्या, ये जो तुलसीदास जी की भाषा क्या है आपकी? अवधि थी वो। प्रेमचंद की है। तो सीन ये है कि युद्ध शुरू होने वाला है। रावण वहाँ उस तरफ रथ पे खड़ा है, बैठा है, और विभीषण जो उनको छोड़ के आया था, वो देखता है कि श्री राम के तो पैर पे जूता भी नहीं है। तो इसलिए नहीं कि उनको शक था श्री राम के वीर पर, लेकिन उन्होंने कहा कि भी तो होता ही है, रावणु रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयु अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा। संदेह आया अधिक प्रीत का, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहत स्नेहा, नाथ न रथ ने तन पद ताना, किस विध जित वो वीर बलवाना। अपने भाई को जानते थे उनके लिए। अब उसके जवाब में जो धर्म रस की व्याख्या की है तुलसीदास जी ने, वो सुनने वाली है। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जो जय होई सो स्यंदनु आना, सौरज धीरज यही रस चाखा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईस भजनु सारथी सुजाना, वीरति चरम संतोष कृपाणा, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अजर अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, कवच वेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जितना गुण कि तो कुरुता के। कि जो धर्म रस के ऊपर होता है वो नहीं हार सकता। और रथ की उन्होंने एक एक चीज़ बताई, पहिया ये है, घोड़े ये है, रास ये है, सारी चीज़। ये बहुत, इट्स ब्यूटीफुल बिट ऑफ लिटरेचर। आई थिंक वर्ल्ड लिटरेचर में ये जो है धर्म रस की व्याख्या इज रिमार्केबल पीस। कि कैसे उन्होंने कहा कि वो तुम डर रहे हो कि मेरे पास रथ नहीं है, लेकिन धर्म रस के ऊपर जो खड़ा है उसको कोई नहीं हरा सकता। और हिंदी फिर किस पे आए मेरे पास में, हट छोड़ सखी चलो संग मेरे, तो ये ब्रिज में कान बुलावत है, इतको तू बैठी मान किए, उस श्याम सुंदर घबरावत है।
हट छोड़ सखी चलो संग मेरे, तो है बिज में कान बुलावत है। इसको तू बैठी मान किए, तो श्याम सुंदर घबरावत है। जाको जोगी जन ध्यान धरत, ब्रह्मादिक पार न पावत है। तेरी प्रीत में भूल गयो प्रभुता, तकसीर वो माफ करावत है। तकसीर वो माफ करावत है। हट छोड़ सखी चल संग मेरे, तो बिज में कान बुलावत। नहीं धेनु चरावण जात सखी, नहीं तुम बिन वाको चैन परत। नहीं खान पान कछु भावत है, नहीं मोर मुकुट पहने कछनी। नहीं अंग सुगंध लगावत है, नहीं धेनु चरावण जात सखी। नहीं बंसी नाद सुनावत है, कैसो हियो तेरो कठोर भयो। नहीं श्याम सूरत तो है भावत है। हट छोड़ सखी चल संग मेरे, तो बिज में कान बुलावत है। एक बात मैं सांच कहूँ सजनी, अब क्यों इतना तरसावत है। एक बात मैं सांची कहूँ सजनी, अब क्यों इतना तरसावत है। प्यारे मोहन से बेगी मिलो जाकर, वो तो तेरो ही नाद उठावत है। हट छोड़ सखी चल संग मेरे, तो ये बीच में कान बुलावत है। इसको तू बैठी मान किए, उस श्याम सुंदर घबरावत। कबीर का क्या कहूँ। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा इनका मोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। जाके जितन से रंग महल में, आसन से मत डोल रे, तो है पिया मिलेंगे। सोने मंदिर दिया जला के, पिया पायो अनमोल रे, तो है पिया मिलेंगे। कहते कबीर सुनो भाई साधु, बाजे अनहत ढोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। वाह क्या बात है सूफियों का कहना। कि घूंघट हमारा जो अंधकार है, अहंकार का है, लोभ का है, मोह का है, हम खोलेंगे तो पिया भगवान सामने खड़े हैं, दूर नहीं है। धन जोबन का मोह न कीजिए, झूठा इनका मोल रे। तो कबीर की तो बहुत अब आ जाए किस पे, संस्कृत पे आ जाऊं। डोगरी नहीं नहीं, डोगरी एंड में करूंगा। तो लाइटर बोझ लेना चाहिए ना। संस्कृत में क्या करूं, स्वस्ति वाचन में तो थोड़ा सा करूं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं। विष्णोरराटं श्री विष्णोः शुन्त्रेस्थो, विष्णोः स्यूरसि विष्णु ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वाः। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवताः। द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवाः, शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुण शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये स्वस्ति वाचन है, कोई पूजा आरंभ करनी हो तो ये बोलते हैं पहले, आरंभ करते हैं इसको। और संस्कृत किसी को आती तो है नहीं यहाँ। नहीं नहीं नहीं, शिव स्तोत्र, बस एक शिव स्तोत्र। वाराणसी के बारे में शिव जी का है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंगमतारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। वाचामगोचरमनेक गणस्वरूपम, वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम,
वामेन विग्रहवेन कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शीतां सुशोभितकिरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागादिपार्जितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् पंचाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं तेजोमयं सगुणनिर्गुणम् अद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितं स्वजुनानुरागं वैराग्य शांति निलयं गिरिजा सहायं माधुर्य धैर्य सुभगं करलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ वाराणसी आशां विहाय परिहित्य परस्य निन्दां पापेरितिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमद्विगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातम् अष्टकमिदं पठे मनुष्य विद्यां श्रियं विप्रसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहबले लभते च मोक्षं विश्वनाथाष्टकमिदं यो पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोद 45 मिनट तो मेरे हो गए अब बोलते अब मुझे डोगरी में स्वागत करता हूँ नहीं that's I don't believe in that I won't say I'm not a Advaitist नहीं वो तो बहुत हुए मैं डोगरी का सोच रहा हूँ संस्कृत और चाहिए किसी को नहीं संस्कृत तो किसी को समझाते तो है नहीं डोगरी का तो भजन होते हैं दरअसल गीत होते हैं ये ज्वाला जी के कांगड़े में माता जी कांगड़ा की थी वहाँ की है मोड़ ज्वाला माई तू बिच पहाड़ां दे बोड़ ज्वाला माई तू बिच पहाड़ां दे सुबह सुबह चोला अंग बराजे सुबह चोला सुबह सुबह चोला अंग बराज कनारी जड़त लगाई ओ बिच पहाड़ां दे बोल जवाला माई तू बिच पहाड़ां दे पंचरंगी सालू शीश बराजे ओ पंचरंगी सालू शीश बराज कनारी जड़त लगाई ओ बिच पहाड़ां दे तू जवाला माई तू बिच पहाड़ां दे ओ दूरा दूरा देसां जात रुआए ओ दूरा देसां जात रुआए जय जयकार बुलाई ओ बिच पहाड़ां दे बो जवाला माई तू बिच पहाड़ां दे पान सुपारी ध्वजा नारियल पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाई ओ बिच पहाड़ां दे बोल जवाला माई तू बिच पहाड़ां दे जेड़ा भगत तेरा गुण गावे जेड़ा भगत तेरा गुण गावे उमन वांछित फल पाई ओ बिच पहाड़ां दे बोल जवाला माई तू बिच पहाड़ां दे ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे ओ ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगाई ओ बिच पहाड़ां दे बोल जवाला माई तू बिच पहाड़ां दे बोल जवाला माई तू बिच पहाड़ां दे
बोली अब आप अब आप बोलिए। हाँ जी। आई थिंक हम लोगों के सब दिल आंखें सब भर गई हैं और इसके आगे क्या कहा जाए। जो हैं आशना सिर्रे असरार के, वो हैं यार सब यार अगयार के। जो मतलब सीक्रेट जानते हैं डिवाइन, वो हर शख्स के वो दोस्त हैं। जो हैं आशना सिर्रे असरार के, वो हैं यार सब यार अगयार के। यहाँ की नहीं जानते रस्मुरा, यहाँ की नहीं जानते रस्मुरा, मियाँ हम तो बंदे हैं पार के। क्या है, कहाँ से कहाँ लेके पहुँचा ये दिल, कहाँ से कहाँ लेके पहुँचा ये दिल, मलाइक जहाँ से रहे हार के। यहाँ फरिश्ते नहीं पहुँच सके, वहाँ आदमी के दिल ने उसको पहुँचा दिया। ये सब फ़कीरों की बातें हैं, जो मतलब हमारे फ़कीर तो इस वक्त यही हैं। डॉक्टर साहब इनका मतलब इनका साया बहुत बड़ा है हम लोगों के लिए, और हम लोग दुआ करते हैं कि ऐसे ही साया कायम रहे। आई थिंक वी शुड एंड on a dua for him and his health and his mind and his being with us for as long as possible. It's a great privilege to have him with us, and this evening is a rare evening that way. और क्या कहूँगा, एक गज़ल और सुन लीजिए। ये ज़रा थोड़ी सी वैसी है। वक्त है ना आशना ना मेहरबान शहर में, ना आशना मतलब इनडिफरेंट, ना मेहरबान नॉट सिंपैथेटिक। वक्त है ना आशना ना मेहरबान शहर में, बंद रखिए अपने ज़ख्मों की ज़बां इस शहर में। सर उठाने की जगह हर शख्स को मिलती नहीं, सर उठाने की जगह हर शख्स को मिलती नहीं, इतना नीचा हो गया है आसमान शहर में। वाह। हर दरीचा मुज़महिल दरवाजे हैं कुमलाए हुए, हर दरीचा मुज़महिल दरवाजे हैं कुमलाए हुए, आज की आंखों में है कल का धुआं शहर में। और पल रही हैं जाने किस किस रंग की चिंगारियाँ, पल रही हैं जाने किस किस रंग की चिंगारियाँ, आशियाँ दराशियाँ दराशियाँ इस शहर में। वाह वाह। डॉक्टर करण सिंह जी, मुजफ्फर भाई, Dr. Sudha Gopalakrishnan, and ladies and gentlemen, it's my proud privilege to propose a vote of thanks. You will all agree with me that Dr. Karan Singh ji, with his recital of poetry, has really enthralled all of us. We are really very fortunate to have been getting his continuous blessings and guidance. On this occasion, I would like to wish him good health, so that we continue to give get his guidance. And on behalf of all of you, and on my own behalf, on behalf of IIC, I would like to thank Dr. Karan Singh for his gracious presence and poetry recital. Let us give him a big applause. Friends, I am thankful to Muzaffar bhai, who cutting short his stay in Thailand, accepting our invitation. He is here with us, and he has really, his sheer presence itself is so inspiring. A big thanks to Muzaffar bhai. My thanks to all of you, ladies and gentlemen, for your gracious presence, and let us hope that in coming months we'll be having more and more such programs, and many programs from Dr. Karan Singh himself. Thank you very much. Thank you. Good night.
facing you directly. कोने पर कुर्सी पीछे करो, तो इतनी जाओ